अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो का मकसद है एक रिएक्शन वीडियो है। जैसे कि मेन मैन सब जानते हैं कि एक स्ट्रीमर है, कंटेंट क्रिएटर है, प्लेयर भी है बहुत अच्छा। तो उसने मैंने टीयर लिस्ट अपलोड की थी जो बहुत वायरल हुई है, और कुछ लोग बहुत नाराज़ भी हुए हैं, और बहुत बहुत कुछ हुआ है ट्विटर के ऊपर इस वीडियो को लेके, इस टीयर लिस्ट को लेके। तो उस टीयर लिस्ट के ऊपर मेन मैन ने एक वीडियो बनाई है, तो हम उस वीडियो को, उस रिएक्शन वीडियो को, उस पर हम फिर एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं जो मैं रिएक्ट करूँगा उसकी वीडियो के ऊपर। तो ये इस वीडियो का मकसद है, और देखते हैं कि क्या कहता है मेरे टीयर लिस्ट के बारे में। मैंने बहुत सुना है कि इसने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। मैंने कहा देखने से पहले क्यों ना मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ, देखते हैं लोगों को किस तरह के रिएक्शन आते हैं मेरी इस वीडियो के ऊपर। तो देखते हैं गाइस कि मेन मैन को मेरी टीयर लिस्ट कितनी पसंद आई है। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि टीयर लिस्ट अपलोड करना एक पर्सनल ओपिनियन है आपका। आप कुछ भी कह सकते हो। मैं लकी क्लिक को उठा के एस टीयर में डालता था कि मेरी मर्ज़ी है, मेरा अपना ओपिनियन है। तो लोग समझते हैं, कुछ लोग गिनती है कि मैं पता नहीं हराडा हूँ या माइकल मरी हूँ, कि जो मेरे कहने से सब कुछ हो जाएगा। अगर मैंने कुमा को एस में डाल दिया तो कुमा नर्फ हो ही गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक बंदे का ओपिनियन है, वो कुछ भी कह सकता है। तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है पर्सनल होने से पहले कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। TheMainManSwe here, hoping you're all doing awesome as always. Am I actually recording? Yes, I am. I hope everyone's doing great and staying healthy. Me, I've got a cold, so my voice might give out, you know. But I'm gonna try and do this. We're looking at Arslan Ash's tier list. It's really cool, and it's not an image here. I've actually recreated it. He made this. This is arguably the greatest scrub in the world, Arslan. The people want to see main man's tier list, not this scrub, this Arslan scrub. He must be joking. No, that's what the people are saying. No, I'm just kidding. I mean, Arslan to me is the best player in the world. So it's like, it's with great humility I approach this, and I just want to give my opinion on it. He's the best player in the world. I just like to analyze the game. I find that to be interesting. I'm nowhere near his play level, you know. He would 30 owe me. Really, I have the utmost respect for Arslan. So for entertainment purposes, I'm going to take a look at this, and it's pretty interesting to talk a little bit and analyze, because I feel like a lot of the time when I watch these pro players give us tier lists, they don't really explain things. They just give you a picture and you're like, okay. हाँ, ये जो शूट बात की है बिल्कुल सच है। ऐसी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि लोग नहीं करते। मैंने भी देखा अक्सर नोबी वगैरह को, या कोई प्लेयर्स हैं, मैं स्पेसिफिक इसका नाम लूँगा, वो टीयर लिस्ट बेचते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस तरह किया था, लेकिन तब मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था यूट्यूब ट्विच की तरह का, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने टीयर लिस्ट किया और मैंने एक्सप्लेन करके मैं थक चुका हूँ, मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, लेकिन दिस इज़ फॉर माई यूट्यूब चैनल, तो मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और या And this is better than me doing an updated tier list. A lot of people have asked me to update my old Season 3 tier list, but I'm just going to wait for Season 4, so we'll do this in between. I'm going to look at King Jizz as well, just to have something completely different to analyze. It's going to be interesting. But so looking at this, like immediately, it's very hard to disagree with the top row. This is pretty much 100% exactly like how I would rank these characters, the top 10, and it's worth pointing out. इन कैरेक्टर्स को कोई कह सकता कि स्टीव को बी में चले जाना चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता। लिरोय को चला जाना चाहिए, जूलिया, हाँ, अगर आप ये कर सकते हो जो मैंने ए में दी हैं उनको एस में ला सकते हो, एस वालों को ए में ला सकते हो, आई थिंक ये कर सकते हो। लेकिन कोई कहेगा फाकुम राम बी में है या फाकुम राम सी में है, तो वो बंदा ही पागल होगा, मतलब जो कह रहा होगा। Now, pointing out that Arslan said that this is in no particular order. He just ranks these as S, these characters an A, but this the placing of the characters here does not matter. He's not saying that Fakum Ram, then Jin, then Devil Jin. He's not being that specific. But it's hard to argue this. I would say, yeah, Akuma probably still the best in the game, but
You would say Fakum Ram prior to the sidestep nerf, but again, you can... This character just has unlimited potential still. As soon as he has bar, he just breaks the game. But this is if the pilot, the player, is strong enough. Very, very hard to play. But all of these... बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ऐसा ही है. जैसे कि हम जानते हैं कि पाकुम अकुमा खेलना बहुत मुश्किल है, और जो लोग अकुमा खेल रहे हैं, जो लोग अभी तक अकुमा खेल रहे हैं, वो कुमा ही खेल रहे हैं शुरू से. उन्हें बहुत मेहनत की है, मैं बिल्कुल मानता हूँ चीज़ को, उन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक आए हैं. लेकिन उसको जो प्लस पॉइंट्स मिलते हैं मास्टर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा है. लाइक अगर आप फिर वो बात करूँगा कि अगर आप डेवलजिन को मास्टर करते हो, डेवलजिन इज़ द हार्ड वन ऑफ द हार्डर कैरेक्टर इन द गेम, और जो रिवार्ड आपको रिसीव होता है वो कुमा के मुकाबले में बहुत कम है. सो ये मेरा मसला है कि वो बहुत ओवर पावर्ड है. हार्ड मास्टर करना मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है मास्टर करना. लेकिन जो एक्स्ट्रा डैमेज मिलते हैं ना, मुफ्ते जिसे कहते हैं, वो समझ नहीं आते. I gotta say I concur, although there are some question marks in my opinion. Okay. That would be nice to hear his reasoning about. Devil Jin is the character here I'm the most like inclined to say he could maybe jump down. But you could argue he stays. But if there's one character here I could argue we could drop down, it would be Devil Jin. And on the characters below here, interesting of course is Eliza, which is something we've just recently learned. Devil Jin को नीचे क्यों लाएगा? Like okay, मैंने फिर कहा था ये okay उसका ओपिनियन, लेकिन मैं अपना ओपिनियन डेवल जिन के ऊपर कि डेवल जिन के पास सब कुछ है. एवरीथिंग हैज़ 50-50 लेज़र पंचेस, ही हैज़ अ हेल्थ स्वीप, वन ऑफ द बेस्ट 50-50 इन द गेम. लाइक उसके पास सब कुछ है. डेवल जिन के पास इलेक्ट्रिक की ट्रैकिंग कम कर दिया और लाइक सब कुछ है. लेकिन ओके उसका उसे लगता है इस तरह तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डेवल जिन टोटली डिजर्व करता है टू बी इन एस रैंक. Is a force to be reckoned with. If you look at classic Korean tier lists, or not even old Korean tier lists, she's here. She's like bottom 5. But if you just look at her frames and her Tekken normals. और मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि एलाइजा को जैसे अभी हमने डिस्कवर किया, इससे पहले बिल्कुल ठीक कहा कि जो जिस कोरियन ने लिस्ट बनाई थी एलाइजा को हमेशा उन्होंने टॉप बॉटम 5 में रखा था यार, कि एंड वाली BC में कहीं ना कहीं आती थी वो एंड पे जाके. लेकिन जब के बाद आतिफ भट्ट ने और पाकिस्तान के जितने लोगों ने और फिर मैंने हमने चीज़ें निकाली हैं एलाइजा की, तो हमें लगा कि एलाइजा इज़ ए. अब हर बंदा जो भी टियर लिस्ट बना रहा है एलाइजा को ए में डाली जा रहा है. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद और भी काफ़ी कैरेक्टर हों जो हमने भी एक्सप्लोर नहीं किए हो और वाकई उनमें पोटेंशियल हो, जो हम समझ रहे हैं, जो भी स्टिल मैं समझ रहा हूँ कि वो बी में है, तो शायद वो इतने स्ट्रॉन्ग हों कि वो ए में आने चाहिए. तो अभी मेरा ख्याल है. लेकिन कुछ कैरेक्टर मैंने वाकई खेल के देखा. लाइक पांडव को मैं खेल के देख चुका हूँ, कुमा पांडा. तो मुझे नहीं लगता है कुमा पांडा के बारे में मेरा व्यू चेंज होने वाला. इस सीज़न 3 में तो एटलीस्ट नहीं होने वाला. वो यहीं डिज़र्व करते हैं, उनकी प्लेस यही है. लिंक शायो की प्लेस यही है, आस्का की प्लेस भी यही है, एडी की. ये कुछ कैरेक्टर्स की होती थी लाइक जो मैं नहीं खेला, जैसे कि आर्मर किंग मैंने नहीं खेला, जैसे कि मैंने हाँ आर्मर किंग है बस. नीना भी खेली है, लेकिन ठीक है नीना बी में ही से अच्छी लगती है. Okay, she's not very good, and I think that's what Koreans do. They're like, how's the poking? Gotta play safe. And she's not about that. She's about getting bars of meter and then doing 2D bullshit. And she's really good at the 2D bullshit. But there's a balance in the character in that terrible frames on the normals, 2D bullshit, double thumbs up, it's great, but requires a lot of execution. Pakistanis are great at 2D, so I don't know too much about the character. I'm going to have to trust him there. But she's definitely not here. Yeah. Lee has been underrated for a long time. He's actually insanely strong. And this is something I can elaborate a little bit on, as a lot of people are not familiar. He has great pokes. He has a great down forward 1. His keep out is some of the best in the game, with back 4, excellent magic 4, down forward 2. He has a 50-50 with the wild standing 2 mix-ups. His slide. He has some good low pokes, down back 3, down back 3+4. His combo damage is great. His wall travel is great.
The counter hit game overall is strong, including the down free. If you're good enough, you know, that's a low launcher. His punishment is excellent. He has the best 10 frame punisher in the game, 50 damage. Acid rain, again, if you have the execution. It's like, no one is gonna say he's easy, but if you have the execution, you really have some crazy stuff with Lee. So I'm gonna try and keep it short, but the character has some great stuff, you know, and his 2-2-3, his magic 4 alone, you know, if you do the dual kicks, bap, what is it, like -6, -5 on block? JLs, right? Which it's like, yeah, execution barrier, but man, has he been underrated. And the back 4 alone with its recovery these days. So this is an underrated character, for sure. Marduk is a monster. Law is interesting not to see up here, because that's a character a lot of top players like, he is top. Law के बारे में मुझे लगता है कि शायद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए. लाइक लॉ में भी एस में ही डिज़र्व करता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है मुझे. लाइक इस करैक्टर के अंदर हमजा लॉ के बाद खेलने से मुझे लगता है कि पोटेंशियल तो है, तो लेकिन अभी माइल्ड लिमिटेशन भी हैं. लाइक हमजा को भी ज़रूरत है काफ़ी प्लेयर्स के साथ खेलने की, उस पर उसका माइंड खुलेगा. तो लेकिन शायद मेरा इस कैरेक्टर के बारे में ज़हन बदल जाए. लाइक अभी मैं ए में रखा है फिलहाल के लिहाज से, लेकिन फ्यूचर में शायद बदल जाए. Fab, if you play him, you know, if you play him perfectly, but no one ever does. Okay. So Law is this like imaginary top 5. I've seen, you know, Ninja Killer or Hisham. Is he from Saudi Arabia, I think? Sorry if I get the country Hisham wrong. Is from Bahrain, but I've seen some people access God Law with perfect, you know, DSS cancels every time. But no one really does that in tournaments. So this is kind of nice to see a very grounded tier list approach to Law. Arslan is basically saying here, yeah, AI here, but in reality here. So I like that. Brian is really good, really good. Dragunov, really good, but yeah, he's not top 10 anymore. The other characters have just surpassed him. Everyone keeps getting buffed except for Dragunov. And the Wild Running 2, losing its tracking, it's like, that was a big deal. You know, that was a big deal. So Dragunov still very strong and all around, but he's not top 10. Shaheen, also a character you could... Honestly, these two are probably the characters where I would go more like, especially Alisa. यहाँ पे मेरा एक सवाल है. लाइक अलीसा को बहुत सारा कहते हैं कि अलीसा टॉप 5 में आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है. बहुत से लोग टीयर लिस्ट बना रहे हैं, टॉप 10 में अलीसा को डाल रहे हैं. लाइक अलीसा के बारे में ये चीज़ समझना लोगों को ज़रूरी है कि उसका चेंसा स्टांस में जो वो करती है, उन चीज़ों को प्लस माइनस जानना ज़रूरी है आप लोगों को, बजाय इससे कि उसके बाद नॉर्मल में चीज़ें नहीं है. नॉर्मल में वो स्ट्रॉन्ग राफर्ट वो अच्छा, विफ पनिश अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके पास लोग जो मार खाते हैं वो चेनसा स्टांस के अंदर जाके खाते हैं. लेकिन अगर उसका आप स्टांस पकड़ लोगे तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है. ये is insane. So this is where I honestly would be the most inclined to honestly place her here. But you know what, we can agree to this, nothing too crazy. But where I do have to stand up, put up my hand and say, I object, is this big old B chunk of leftover dumpster shit here. Because this is where I'm like, you gotta be a little bit more specific, in my opinion. So this is where... देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे. मैं स्पेसिफिक क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो अब कुछ लोग मेरा ख्याल है, मैंने शायद फॉलो नहीं किया, लेकिन शायद जब रांचू टेकन वर्ड टूर से जीता था उससे पहले भी लोगों ने टिकट लिस्ट अपलोड किए होंगे, ठीक है, अपलोड किए होंगे. तो उसके अंदर उन्होंने पांडा कुमा को एंड पे डाला होगा, लेकिन रांचू डायरेक्टली लाइक जैसे भी मतलब कि अजूबे की शक्ल में लाइक जाके जीत गया, ठीक है, टूर्नामेंट टेकन वर्ड टू वर्ड जीत गया. तो उससे ये पता लगता है आपको कि उससे और भी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं KF भी खेलता हूँ, मैं बहुत सी गेम्स खेलता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ गेम तो गेम है, लाइक
अब मैं कहता हूँ कि 80% गेम है, लेकिन जो 20% है ना वो आपका डिटर्मिनेशन है टुवर्ड्स योर कैरेक्टर। अगर आप एक लार्स खेलते हो और लार्स बहुत चीप है, लेकिन जो आपकी डिटर्मिनेशन है और जो लव है आपको कैरेक्टर को लेके, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। वो आपको, वो जो कैरेक्टर बी में है, तो आपके प्यार की वजह से और आपकी एफर्ट और लव की वजह से आप चीज़ें निकाल लोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, आप उसको एक रैंक ऊपर लेके जा सकते हो। ये मेरा पर्सनल मानना है। इसलिए मैंने कोई C D E F G नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बी बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि S और A देना ज़रूरी है। और मुझे, मेरा ख्याल है बी देने की और C D देने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो करैक्टर्स और जो प्लेयर जो खेलने वाला है उस पर बहुत डिपेंड करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी नोक्टिस कहते हैं कि बहुत बेकार है, लेकिन क्या पता कि नोक्टिस भी चल सकता है। टूर्नामेंट की बात है ना, आप तो जज करते हो टूर्नामेंट में क्या करता है बंदा। अगर दो कॉइन्स का टूर्नामेंट है तो वो बंदा आपकी ब्रैकेट स्थान आ जाती है, टूर्नामेंट जीत जाते हो नोक्टिस लेके। इज इट पॉसिबल? मैं सही क्या, इट इज़ पॉसिबल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूल तो इजीली क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं आपको टॉप 8 के अंदर मिलते हैं। कहीं नोक्टिस के भी कुछ बैड मैचअप्स होंगे, लाइक है ना, भाई मैं खेला नहीं हूँ, तो आपको वो प्लेयर मिल जाते हैं जिसका नोक्टिस बैड मैचअप है, तो आप उनके करेक्टर्स को डाल देते, टूर्नामेंट तो जीत सकते हो। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो इसलिए वजह कि मैंने C और D T लिस्ट नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ ये वजह। Sorry, blasphemy to Lord Arslan. But what I'm gonna do now is I'm gonna put a C here. A C. And I'm going to immediately, just to give this list more definition, but again, this is my opinion, I'm going to put Gigas. I'm inclined to want to put Armor King there as well, but we're going to start with the most obvious examples. Okay. Guys, in my opinion, in my personal opinion, okay, so maybe he gonna make another bracket or other row D, but पता नहीं अभी, लेकिन पांडास इतने ज़्यादा वीक नहीं है। लाइक C, ओके, या उन दूसरे कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एज है पांडास पे, लेकिन अगर D में नहीं डालना चाहिए पांडास को, क्योंकि मैं खेलता हूँ पांडा, बहुत वीक नहीं है, वीक है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। Okay. So there must be a little bit of separation here. In my opinion, Gigas is no longer the worst character in the game, but he's bottom 2. Lars is the worst character. No, guys, I completely disagree. Gigas is not bottom 2. Definitely Gigas is not bottom 2. Gigas has very good, like not very good amount of good matchups, but I think कि उसके पास अच्छे मैचअप्स हैं जो गीगस मार सकता है। लाइक मेरा ख्याल है कि वो ज़फीना को अच्छा टैकल कर सकता है, वो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छा टैकल कर सकता है, अलाइजा को, काजुमी को बहुत अच्छा टैकल कर सकता है, ट्रस्ट में। और गीगस ब्रायन को भी शायद बहुत अच्छा टैकल कर सकता है, मे बी शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है गीगस इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट बॉटम 2 in the game, in my opinion. And that can be controversial to say, considering the bad defensive options Gigas has, and he has no movement. But he has an interesting power crush, and I see a few godlike Gigas players utilize the down 3+4 really well. Lars has better defensive options. His punishment is actually really good, and his movement is quite alright compared to Gigas. But Tekken 7 is a more offensive game rather than defensive. This game, due to the limited movement, favors offensive game, and due to the top characters being so safe. So Lars having a great 14 frame standing Punisher is not too much of a thing in this game, in my opinion. Like, किसका कहना है कि Tekken is offensive game, not a defensive game? Like in which sense? When top players fight with each other, तो वो क्या करते हैं? लाइक मैंने देखा, लाइक इफ आई एम फाइटिंग अगेंस्ट नी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम राउंड इस तरह होता है कि टाइम अप हो रहा होता है, तो लाइक इट्स नॉट फेवरिंग ऑफेंसिव गेम प्ले, राइट? पता नहीं इसने क्या सोचेगा, बट मैं शायद गलत समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिफेंसिव ऑफेंसिव इज बैलेंस्ड, और मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, तो ओके होगी। And Lars has no viable offensive options.
His lows are terrible. His mids, terrible. His poking, terrible. When it comes to offense, this is the worst character in the game, I think, and the riskiest. Whereas Gigas, actually, on a very basic and fundamental level, has a long-range jab, down forward 1, down 2, and down back 2 to get some frames with a low. Lars just doesn't have that very basic utility. Gigas can win tournament level matches. Yes, Lars has the hardest time. I think Lars is the worst character in the game, actually. So Gigas, Miguel I find to be terrible. I think he has way too many range problems, unsafe, bad tools overall. So subpar compared to एक चीज देखते हैं यहाँ पे comparison करते हैं. Like क्या लगता है आपको कि मिगेल नीना को नहीं मार सकता? क्या लगता है कि मिगेल लाइक जो भी बी कैटेगरी के अंदर प्लेयर्स हैं उनको नहीं बीट कर सकता? मेरा ख्याल है कि बीट कर सकता है. मेरा ख्याल है मिगेल काफ़ी प्लेयर्स को बीट कर सकता है. मिगेल नीना को भी कर सकता है. मिगेल बॉब, लाइक मिगेल लिंगशाइयो, किंग, काफ़ी प्लेयर्स को बीट कर सकता है. डिपेंड करता है कि कौन खेल रहा है मिगेल. और स्टिल वही वाली बात से जो चीज़ें की हैं बिल्कुल सही पॉइंट आउट की हैं, लेकिन वही बात कि मिगेल खेलने वाला होना चाहिए ना. अगर किसी को शौक है मिगेल से खेलने का, लाइक अब मेरा बस नहीं चलता मैं खेल के दिखाऊँ, लेकिन ना टाइम नहीं है. लेकिन बी कैटेगरी के प्लेयर्स एक दूसरे को मार सकते हैं, एक दूसरे को मुकाबला कर सकते हैं. हाँ मैं मानता हूँ कि एस कैटेगरी के प्लेयर से नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं. तो ये सीडी में कैसे आ गए? लाइक समझ रहे हो, जब आप एक दूसरे को मार सकते हो तो फिर कैसे? तो दिस वाज माय पॉइंट. और हाँ अगर ओवरऑल जनरल टूल्स की बात की जाए, हाँ फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. शायद वो इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहा है उसको. What we find up here. I find Miguel to be terrible, and I don't understand why they nerfed his Savage stance so much. Down back 3 and down forward 2. Okay, certainly they made Savage 2 safe, but that's not enough to compensate for what they did to those other options. And just range problems. Kuma and Panda, they have some good tools. They have some gimmick novelty that can win. We've seen that, but overall, good characters? Definitely not. Eddie is terrible. Eddie is so risky. And this is where, obviously, this is a pro player tier list. If you play in beginner and intermediate, you pull out your hair fighting Eddie. But trust me, as soon as that same Eddie player goes up against someone who knows the matchup, it's the Eddie player pulling out his hair, going bald. Like, you gotta just trust me on that one. So, that was some definition. And now I'm going to give it even more definition. I think we're gonna make other row above. Okay, maybe I'm gonna make an A or B plus. B plus. B plus. That's cool. Because I feel we need an even higher degree of definition here. अच्छा तो वो क्या करेगा कि वो कुछ प्लेयर्स को B से निकाल के A में ले आएगा, like B plus में ले आएगा. Okay. I simply can't see Hwoarang on the same level as Heihachi and LA. He's way और जो अभी हो रहा है हमारे पास, like Hwoarang has too much potential, guys. Hwoarang has too much potential. Like अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं. Like हाँ मैं भी गलत हूँ, ये हो सकता हूँ, ये भी सब कुछ कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आई थिंक Hwoarang स्टिल हैज़ टू मच पोटेंशियल. तो Hwoarang और Heihachi, आई थिंक Hwoarang can beat Heihachi in my opinion, and he thinks that Hwoarang can't beat Heihachi, or Heihachi is better than Hwoarang in some ways. Okay. Or Katarina, he's way stronger than them. Okay. So at B plus, I'm gonna make another tier, and I'm going to just take out characters I feel just are stronger than everyone else here. Kazuya is interesting because everyone is overhyping the character so much. He's top 5! He's top 5! What? It's like,
I just recorded a video on Kazuya versus Devil Jin, who's the strongest, and in my opinion, Devil Jin, easily. People just look, I promise, people just look at the 50-50, and they say, Kazuya's stronger 50-50! He's the better character! So, those characters aren't just about 50-50s. That's a very simplified analysis. And I swear to God, like, I watched, like, King J's tier list, where he's talking to some guy called Landon, I think, and it's like, look what Kazuya gets from forward 3 and 50-50, and it's like, well, I've made a detailed video on it. But Kazuya is extremely overhyped, and you can't put high on a tier list a character that has ridiculous execution demands, terrible poking, has no defensive options, takes enormous risks every time he attacks. And I'm not only talking about while standing 2 being launch punishable, Hell Sweep being launch punishable, I'm talking about the fact that all of his good moves come out at 20 frames and he has no high crushing. What do you think all of these guys do to characters who do that? I think back 4. Oh, Magic 4, Magic 4. Oh, back 4 के बाद थोड़ी high crushing property है ना, back 4 की नहीं है, मैं कभी खेला नहीं, शायद है. You know, Steve back 1, you know, all of these amazing highs. It's like Kazuya needs ridiculously good execution and timing to do well. And he's not consistent. He's not safe. Is he still a great character? Yeah. Is he top 10? Absolutely not. So overhyped to a ridiculous degree. Asuka top. Okay, is his opinion. Ryu, Jack, Josie, Negan. Negan isn't B+. He must be kidding. Okay. Bob, Claudio, Master Raven. Now I feel we have more proper definition in the tier list. These, I think, अगर मैं बनाऊँ ना, अभी इस तरह कुछ करें हम भी, तो मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए ना जिस कैरेक्टर्स को. आस्का तो पहले नीचे है ना सबसे पहले, और उसके बाद आस्का जब नीचे आएगी तो उसकी जगह ऊपर जाएगा. आई थिंक यूशिमित्सु या लई, आई थिंक ये दोनों B+ में जाने चाहिए क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. फैंग को भी B+ में जाना चाहिए, और फैंग की जगह आना चाहिए आई गेस नीगन को. बॉब, क्लाउडियो, हाँ स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है. तो आई थिंक ऊपर से नीचे तारो आस्का को और नीगन को उतार दो और ऊपर ले जाओ लई को सॉरी और यूशिमित्सु को, और नीना को भी लेके जा सकते हो ऊपर. आई थिंक characters, in my opinion, have a slight edge on the characters below. These characters, for various reasons, are just notably a little bit riskier and just lack the options these characters have. And these characters are literally quite... I mean, the game is very balanced, but these characters are obviously the worst, in my opinion. And there's no reason to post Kazuya next to Gigas in a tier list. Or Horang, for that matter. So yeah, this is how I would do with this tier list. If you want to correct it, if you want the Gandalf of Tekken to come and just wave his magic wand of 200 IQ knowledge, this is what it looks like. This is the corrected tier list. So, you know, Arslan comes with a tier list and I go fixed. Nah, but I'm just kidding. So it's like, I don't know what he meant with his tier list. If it's like, the game is so balanced that, you know, everyone goes into B. He nailed it perfectly with the top rows, in my opinion. But
if I was just to do a little bit more of refinement, this is what I would do. And hopefully you got some interesting analysis of certain characters. नहीं, मुझे बहुत लाइक मैं एग्री करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मेन मैन की अच्छी टियर लिस्ट बनाई है. लाइक अगर उसने रिफाइन भी किया है इस चीज़ को तो बहुत अच्छा किया है. मैं अगर डिसएग्री भी करूँगा तो सिर्फ 1-2 कैरेक्टर्स है जो मैंने भी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आई थिंक आई एम 80% और 85% मे बी 90% एग्री विद दिस टियर लिस्ट. ओके, अगर मैं भी शायद करता तो शायद इस तरह करता, क्योंकि उसने जो मेन चीज़ है ना, जो मैं आपको पहले कहा है, उसने S+ को और A को नहीं छेड़ा. जो मेरी मेन चीज़ है उसने उसी को नीचे से मज़ीद चीज़ें कर दी हैं, उसकी ब्रांचेस बना दी हैं, 2-3 रो डाल दिए ऊपर नीचे, तो वो उसने कर दिया. लाइक तो रहता वही है, सही है ना, बस मोड उसने क्लासीफाई कर दिया. तो उसने मेरी चीज़ को कम्प्लीटली इन अ वे किया है कि बिल्कुल ठीक है. तो जो कंसर्न है, मेन जो कंसर्न है वो आपको, आप क्या किसी करेक्टर, कोई आप गेम स्टार्ट करते हो, आप क्या देखते हो कि इसके अंदर कौन से करेक्टर हैं, वो देखते हो, या आप भी देखते हो यार इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग कौन से करेक्टर हैं. डेफिनेटली आप देखते हो कि इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग कौन से करेक्टर हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग है वो S+ और A वाले हैं. तो वो भी कह रहा है कि ये बिल्कुल फिट है. I don't want to start talking about everyone because that takes forever. I just wanted to talk about the controversial picks. And also, I think King J, I don't know if King J did this, but he put, I'm going to do King J's tier list as well, but placing Heihachi like here, to me, it's just laughable. It's laughable. Heihachi is so much weaker than Kazuya and Devil Jin. There's no contest. But he's not bottom 5. He has the electric. So I hope you enjoyed my little tier list here. Big thumbs up to Arslan for giving us tier lists. It's so much fun to look at. And yeah,